Spoken English tips, part 5. Think in English. This is the greatest tip any instructor could give you. हम सब पंजाबी ख़ास तौर पे एक गलती ये करते हैं कि हम सोच पंजाबी में रहे होते हैं और हमारे दिमाग की एक डिक्शनरी उसे उर्दू में कन्वर्ट कर रही होती है और हम बोल इंग्लिश रहे होते हैं. सो यू हैव एनी आइडिया हाउ योर ब्रेन इज स्ट्रगलिंग टू कोप अप ऑल दिस स्टफ? सी, वन डिक्शनरी इज थिंकिंग इन पंजाबी लैंग्वेज, द अदर इज ट्रांसलेटिंग इट इनटू उर्दू, एंड द थर्ड डिक्शनरी is articulating English language. So this is a lot difficult. What you have to do is to start thinking, or at least you can start practicing to think in the English language, the very language you're speaking. Now that can be a little difficult at the beginning, but if you keep practicing you can overcome it, right? So मैं आपको अपनी personal habit बताऊँ तो when I'm speaking English I forget that I am a Pakistani, a Punjabi, a Pendu, because I live in a village. I behave as if I'm a vagabond wandering in the street of London. Okay, so what you have to do is to start thinking in the very language you're speaking, right? Start thinking in English if you want to speak it. That's it for today. See you next time.